Hi everyone, welcome to today's video. So on today's video, I'm going to do something really interesting. I'm going to decode how smart celebrities invest their money. For example, विराट कोहली के बहुत सारे businesses हैं, दुनिया भर में व्यापार फैला हुआ है. And how do celebrities who are not smart with money, why do they go bankrupt and what type of investment decisions they have made? Honestly, पब्लिक में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. आई एम गोइंग टू decode their business strategy, investing strategies for all of you. What are the lessons that I am drawing from it? I will explain it towards the end of the video. Hopefully, you will be able to derive some of the key lessons and curate your investing style accordingly. So let's kickstart with a very interesting story about Michael Jordan. कई और नाम सुना होगा. He is a basketball mega star. भारत में इतनी basketball चलती नहीं है, लेकिन his story is very very fascinating because what he did was that he actually got, one could argue, sweat equity in Nike. And अभी एक ये ट्वीट है, इट एक्चुअली इनकैप्सुलेट्स द एंटायर स्टोरी रियली ब्यूटिफुली दैट ये जो डील हुई थी, राइट, दिस डील हैपेंड डेकेड्स अगो व्हेन माइकल जॉर्डन हैड जस्ट स्टार्टेड हिज करियर एंड ही वाज इन द अर्ली फेज ऑफ इट. एंड अभी भी उनको रॉयल्टी से बहुत पैसा मिलता है. फॉर एग्जांपल इन 2018 नाइकीज जॉर्डन एयर, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था एंड उसमें उनको रॉयल्टी मिलती है, द टोटल सेल्स ऑफ दैट ब्रांड वाज $2.8 billion एंड देन यू हैड 2019 $3.1 billion, 2023 $6.6 billion एंड माइकल जॉर्डन owns 5% royalty in that particular brand of Nike. This has turned out to be a multi-bagger investment for him. It has changed his life completely, and one could say that this was a really smart investment. What is the key lesson that I learn out of it? Well, it's the lesson of courage. The courage being कि उस टाइम पे रॉयल्टी डील्स होती नहीं थी. मोस्टली जब एथलीट्स होते थे, क्योंकि ये थोड़े टाइम पुरानी वाली बात है, तो उस टाइम पे देयर आर हार्डली एनी रॉयल्टी डील्स दैट यूज्ड टू हैपन एंड माइकल जॉर्डन वाज वन ऑफ द अर्लियर सेलिब्रिटीज टू हैव डन दैट and that is still paying him massive dividends as of now. Now compare this story to Mike Tyson. Now he was also one of the top athletes of his time, one of the top boxers in the world. He made approximately $400 million in prize money by fighting in his career, and he ended up losing almost all of it and he had to file for bankruptcy. This was not a business bankruptcy जो जैसे रॉबर्ट कियोसाकी वगैरह करते हैं. This was actually a bankruptcy where he did not have any money left. Similarly, you had Nicolas Cage. आप इससे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि he over invested in real estate and lost a ton of money and he had to sell that real estate and liquidate that real estate at really bad prices. So very quick lesson, and lesson number one for me is that you need to be smart about money irrespective of whether you are at the top of your field or not, because even top guys like Mike Tyson or Nicolas Cage, these could argue are A-list celebrities, even they ended up losing their wealth. So it's extremely critical that you watch this video till the very end. I'm going to boil down all the lessons for you in very simple, easy to understand language. So we understand that many celebrities are exceptionally good in terms of managing their money, starting multiple businesses. Even us normal people, we need to be smart with our money. And one way of being smart with our money is to have a term insurance, because that provides a safety net for you. According to different studies done, it is clearly coming out that millennials who are between the age 25 to 35, most of them do not have a term insurance. Only 17% have term insurance. Most of them have very little clue what purpose does term insurance serve. Many of them think यार insurance खरीद के क्या होगा, it's way too expensive, what type of cover to buy, what is a cover, what type of benefits we will avail. There are so many complicated questions around this space. So it's very important to consult an insurance expert who can handhold you in terms of buying a term insurance. So for that, I would highly advocate that you go and speak with IRDAI certified advisors. They can help you understand what type of term insurance you might need and what type of term insurance might be useful for you. Ditto is backed by Zerodha and they have helped over 250,000 customers buy the right type of insurance products. So definitely go and check it out. The link is in the description and comment box. You can schedule the free phone call by using the links below. And over to the main video now. तो चलो बात करते हैं Indian celebrities की first and foremost. And the very first person that comes to our mind is Virat Kohli. Because undoubtedly he is extremely smart, he is very young, he has a lot of career left, one could argue, he has a lot of business career left in him, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती. So let me decode Virat Kohli's investment strategy first for you. So what Virat Kohli does is that he invests primarily in startups. उनकी equity investing बहुत कम है, जैसे लोग तो बोलते रहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो this that, but उनकी equity investing बहुत कम है. I'll explain you the reason also. So number one, he invests a lot of money in startups. Number two, he has a lot of properties. One could say approximately 110 crore worth of property, हो सकता है इनफैक्ट ज़्यादा ही उनकी. And the third key thing is that he is investing a lot in his social media. आप देख सकते हो कि Instagram पोस्ट के लिए he is charging 8.9 crores.
आई डोंट थिंक दैट दिस नंबर इज करेक्ट दो, वो यार मीडिया वाले उड़ा देते हैं चीज़ें. बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली 3 मेजर टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग दैट ही इज डूइंग. वन, ही इज इन्वेस्टिंग इन हिज ओन पर्सनल ब्रांड जो सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट होती है, एंड ही इज एबल टू कमांड प्रीमियम चार्जेस. उनका कैश फ्लो बनता है. He is smart enough to understand, you know what, boss, this thing is not going to last, right? Till the time he is playing cricket, he is the captain of the Indian cricket team, वगैरह वगैरह, उनको brand endorsements बहुत मिलेंगी. But maybe 15 years down the line, this thing is going to come down because there will be another superstar, maybe like Shubman Gill or whatever. They are going to replace Virat Kohli when it comes to this social media game and all. Okay, so this is one. Now comes a very natural question, कि okay, where is he putting his major money? So I would say that he is putting his major money behind startups. So now 2 very interesting questions come. One is that why is he putting so much money behind startups? And second key question is that why is he not investing much in stocks? क्योंकि यार stocks तो सबसे अच्छे investment होते हैं, तो दुनिया के लोग बताते हैं, आप बताते हो that stock is the best investment. So let me clarify these points because आपको nuanced understanding होना चीज़ों की बहुत ज़रूरी है. See, the reason why he invests in startup is, and this is called as angel investing, so to say. Now the reason why Virat Kohli is investing a lot in startups is because he is doing equity deals, right? So equity deal का मतलब क्या होता है कि for example मान के चलो I am building Wisdom Hatch, which is one of the companies that I run, and somehow Virat Kohli watches this video, he likes me and he says, you know what, Akshat, तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, this that. यार now I don't have money to afford Virat Kohli, I cannot pay him like 100 crores, right? So what I would do is कि यार see Virat, I'm like, you know, building a brand. How about I give you like 20% of the company? I cannot afford you, so you take my 20% of the company and you become an investor in it, right? So इस तरीके से equity deals होती है. And if Virat Kohli sees value in me, in the company that I'm building, so he might do that equity deal with me. So the reason why he is investing in startup is twofold. One is that startups, for example, Wisdom Hatch does not have the money to pay Virat Kohli cash. Okay, so that's point one. Number two, Virat Kohli understands that if he is going to back a company like Wisdom Hatch, hopefully, then Wisdom Hatch is going to become bigger one day, the way it happened for Michael Jordan with his Jordan Air shoe. And if he is holding equity in that company at that point in time, or rather, holding equity in that startup at that point in time, he is going to make a lot of money. So for Virat Kohli, it's a strategy game, not a cash flow game. Why? Because उनके कैश फ्लो कहाँ से आ रहे थे? कैश फ्लो आ रहे थे, अभी इज प्लेइंग फॉर टीम इंडिया, बहुत मस्त पैसा मिलता है, आईपीएल वगैरह, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, सो वहाँ से तो कैश फ्लो आ ही रहा है, राइट? सो अभी ही डज नॉट नीड टू वरी टू मच अबाउट कि यार फलाना टीम का HUL का स्टॉक खरीद लेते हैं, HDFC बैंक का स्टॉक खरीद लेते हैं, डिविडेंड आ जाएगा. ही डज नॉट नीड डिविडेंड टू बिगिन विथ. He is making strategic moves. He is doing high volatility or high alpha investment. Now, what are high alpha investments? High alpha investment होता है जिसमें risk बहुत होती है and reward is also very very high. This is like VC investing strategy, so to say. So one could argue that Virat Kohli is a VC fund in himself. So what he is doing, in very simple words, is वो startups इसलिए pick कर रहे हैं because A, his cash flow is already sorted. So he can take the risk of investing in, let's say, 500 startups. That might be an equity deal. And उनमें से अगर 5 भी, even 5 become unicorns, so to say, then he is going to mint crazy amount of money. Not only now, but after the time he retires and well into the future. Okay, so this is the reason why he is picking startup. It's a high risk, high reward bet for him, and he can afford to play it. Now मेरे पास counter question आता है कि अक्षत, you know what, हम Shark Tank देखते हैं, हमें भी invest करना है startups में, बता दो करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए. Why? Because you are not bringing any strategic value to a startup. For example, let me explain this via a simple example for you, right? For example, Rage Coffee. यार अब coffee है ना, इतना plain vanilla product होता है, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर आपको रैंडम कॉफ़ी पिला दी जाए स्टारबक्स की और XYZ ब्रांड की, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी कॉफ़ी कौन सी है, राइट? सो इट्स अ वेरी प्लेन वनीला प्रोडक्ट. इट ऑल इज जनरेटेड बाय द ब्रांड, राइट? सो it all comes down to branding. So if Virat Kohli lends his brand to Rage Coffee, then that simple product becomes a elite, luxurious product. So he is adding a lot of strategic value to something like Rage Coffee. Second, let's take a look at Chisel Fitness. Right now, Chisel Fitness क्या है यार? It's a fitness brand, and Virat Kohli is known to be extremely fit. He somewhat, one could argue, elevated the standard of fitness in the Indian cricket team. So this is again has a very high strategic fit, right? Now इसमें आप देखो कि Universal Sports Biz Private Limited. Now this is a fashion startup. Now I'm assuming that Anushka Sharma might have invested in this. So what I'm trying to get is कि ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी भी random startup में जाके पैसा लगा दिया. Whatever startups he is picking, he is investing that money intelligently. He actually brings a lot of value for that startup. Similarly, अगर आप एक और स्टार्टअप देखो,
रोगन और रॉन्ग, उसको जो भी बोलते हैं, जो भी स्पेलिंग है ये, राइट। सो इसमें आप देख सकते हो कि इसकी ये टी शर्ट भी पहनते हैं कई बार, राइट। सो आपने कई बार देखा होगा ये, नाउ दिस इज लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड। यार अब ये टी शर्ट बनती होगी यार 300 रुपए में या समथिंग, राइट, एंड नाउ इट माइट बी गेटिंग सोल्ड फॉर लाइक 2,500-3,000 समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेट, बट वाई, बिकॉज विराट कोहली स्पोर्टिंग दैट। सो एक प्लेन वनीला टी शर्ट नहीं उनने, उसमें ना अपना लेवल चिपकाया, नाउ लेवल में ये इक्विटी बहुत ओन करते हैं। नाउ इट्स बिकॉज ऑफ विराट कोहली आई नो अबाउट दिस ब्रांड, राइट। मैंने उनको कई बार पहने हुए देखा है। इसके अलावा किसी और सेलिब्रिटी ने किया है इसमें इन्वेस्ट, आई एम नॉट श्योर। सो ही माइट बी ओनिंग अ लॉट ऑफ स्टेक इन दैट कंपनी। ऑन टॉप ऑफ दैट ही ओन स्पोर्ट्स टीम्स, जैसे मेरे ख्याल में FC गोवा इज ऑल्सो ओन्ड बाय विराट कोहली। सो इफ यू आर इन गोवा एंड इफ यू फॉलो फुटबॉल, फुटबॉल इज रियली बिग इन गोवा एंड FC गोवा इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्लब हियर, बहुत उनका अच्छा खासा फैन बेस है। Now this is a very intelligent strategic investment done by Virat Kohli. Now am I dissuading you from investing in startups? The short answer is no. But you need to understand that कि A, you understand about that startup जिसमें आप invest कर रहे हो, and point B that you need to understand is that you are offering some kind of strategic value for that startup. आप बोले कि यार I'm like in a corporate job, मेरी ऐसी कोई खास value है नहीं to this startup, मैं startup के पीछे भाग रहा हूँ कि पैसा ले लो पैसा ले लो। See, अगर आप स्टार्टअप के पीछे भाग रहे हो पैसा ले लो, देन यू आर गोइंग टू बी गिवन वेरी हाई क्रेजी वैल्यूएशन। यू आर अनलाइकली टू मेक मनी अनलेस दैट स्टार्टअप समडे एग्जिट्स और गिव्स एन IPO एंड उसमें आपका पैसा बन जाए। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी। नेचुरल क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे स्टार्टअप इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वगैरह वगैरह, ना आई विल नॉट नेम दोज कंपनीज, उसके थ्रू कर दें तो नहीं, बिल्कुल मत करो, कोई मतलब नहीं है। अगेन आपको बड़ी चढ़ी वैल्यूएशन मिलती है, आपका पैसा डूबेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, राइट। How do I personally use it? I only invest in finance and edtech related startups. Why? Because my background is in finance. I am offering some kind of strategic value, strategic insights on finance companies. मैं उनको बता सकता हूँ कि यार customers कैसे सोच रहे हैं मार्केट के बारे में वगैरह वगैरह। So there is a strategic value that I am bringing to the table there. I have exited couple of very good investments जिसमें मेरा angel investing करके पैसा बना था. Now I have rotated it into different startups. Okay. So I hope that Virat Kohli strategy is clear. And final point इनका properties को लेके कि 34 करोड़ की 80 करोड़ की। So see, the thing that I can learn from Virat Kohli here is that he is buying elite properties, right? And अब मैं of course I cannot spend like 80 crores buying a property, but whatever property I am buying, I am doing it in an elite fashion कि यार ठीक ठाक साइज की प्रॉपर्टी हो, इट शुड अपील टू लग्जरी सेगमेंट प्रॉपर्टीज। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, क्या जबरदस्ती खरीद लेंगे बस, प्लेन वेनिला फ्लैट खरीद लेंगे 2 BHK। Now 1,000 other people are owning like those basic things. Now I'm not discouraging you. अगर आपको वो रहने के लिए खरीदनी है तो बात अलग है, लेकिन that cannot be considered as a real estate investment per se. Okay? ये जो विराट कोहली की प्रॉपर्टीज हैं, they will still give him excellent returns, right? So ये हो गई विराट कोहली की स्ट्रैटेजी। Now अब ऐसे भी कोई सेलिब्रिटीज हैं जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एंड बहुत अच्छा लेसन भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अजय देवगन का है, इन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका नाम था पेनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल। ही इन्वेस्टेड रफली 2.7 लाख करोड़ रुपी फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर एट 274 रुपीज। अभी इस स्टॉक की प्राइस करीब 900 रुपए के आसपास है। इनका ऑलमोस्ट 4 टाइम हो गया पैसा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एंड अगेन आप डिटेल्स में जाके देखो कि व्हाई डिड ही पिक दिस स्टॉक। द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देवगन हैज वर्कड विद पेनोरमा इन इट्स प्रोडक्शंस लाइक दिल तो बच्चा है जी, रेड एंड दृश्यम। इसमें दृश्यम के अलावा मुझे पता नहीं था ये सब मूवीज भी हैं, बट ही एक्चुअली अंडरस्टूड कि यार ये स्टूडियो कर क्या रहा है। ही मस्ट हैव had some kind of internal understanding. I'm not doing internal information, but he would have had some kind of internal understanding कि अच्छा यार growth दिख रही है, ये production house अच्छा है वगैरह वगैरह। So therefore he would have picked it, which comes from his decades of experience as an actor, understanding about that space. What is the lesson that you and I can learn? For example, अगर आप tech में हो, right, and if you are working with Google, Microsoft, possibility is that you understand the inner workings कि भाई कौन सी कंपनियां इनमें से are going to win in the AI space. Okay. आप पिक कर लो अभी से, राइट, एंड यू कीप ऑन होल्डिंग फॉर 10 years एंड दैट कंपनी इज गोइंग टू गिव यू क्रेजी रिटर्न्स। नाउ इफ यू आर एबल टू डू दैट इन द स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी, नाउ ऑफ कोर्स देन यू आर गोइंग टू मेक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। सो ऑन दैट नोट यार मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, एंड अगर आपके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं बोल रहा मैं आपको बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक इंटरनल इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, इसमें आप एनालाइज करके पहुंच सकते हो, डू शेयर इट विद मी, आई विल रिसर्च फर्दर, यू गाइस कैन मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, सो दैट वे वी विल इवेंचुअली बी एबल टू शेयर इट विद एंटायर कम्युनिटी। ये कोई स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं है, वी ऑल आर जस्ट यूजिंग आवर ब्रेन and using our collective understanding about different industries to research the best possible opportunities. तो ये तो हो गई अजय देवगन की बात। Now he is not the only celebrity here on the list. Many people, for example, Sachin, PV Sindhu, VVS Lakshman, Saina Nehwal, these are all like A-list
celebs in India. They invested in a company called as Azad Engineering, and their money has grown like crazy. Now नाम सुन के तो लगता है कि यार Azad Engineering is an engineering company and why are sports people investing in it? Now यार मेरे को आंसर नहीं मिला इसका, and even I'm puzzled कि why would someone like Sachin Tendulkar or PV Sindhu will pick stake in it? Maybe कुछ equity होगा, something like this, but I was not able to figure out an answer. In case you guys know, let me know. But इनके पैसे अच्छे बने from this. Now Sachin Tendulkar invests in a bunch of companies, right? Bunch of equity investments he does. Now I don't think that these are publicly listed, but Sachin Tendulkar loves renewable and energy space for some reason, engineering space also. So it's not as if that this is the only bet that he has taken in the engineering space. He had invested in another company called as RRP Electronics. उन्हें शायद Suzlon Energy में भी invest किया था. I'll have to double check that information. So he is picking bets in somewhat tech in India. Not sure why. So I can't decode that strategy for you because ये थोड़ी सी complicated space हो जाती है. But like I mean, one could commend Sachin Tendulkar for his insightful analysis on stocks also, right? So he is doing that, right? On top of that, he does a lot of startup investing. I know for a fact that he has invested in an academy and a bunch of other startups, so to say. Some of them are close to IPOing. So at that time of IPO, Sachin is going to make a lot of money on that. So he is doing startup investing, he is doing real estate investing. In fact, the place where I live in Goa, उसके पास ही, बहुत ही पास, मतलब it's like maybe 10-minute drive from my place where Sachin Tendulkar has a house in Goa and he was one of the first people to buy it there. So he loves South Goa, he invests a lot of money in South Goa and multiple properties which I know of for sure. So he is definitely investing in real estate, he invests in startup, he invests in stocks. इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का डेटा मुझे मिला नहीं है, बट आई एम क्वाइट सर्टन कि यार इन लोगों के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत होंगे. फॉर एग्जांपल शाहरुख खान का दुबई में बहुत इन्वेस्टमेंट है. द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट गाइस दीज पीपल आर हाईली डाइवर्सिफाइड. इट्स नॉट एज इफ दैट दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी कि हम सिर्फ रियल एस्टेट ही खरीदेंगे, कि यार हम सिर्फ सिर्फ बॉन्ड्स ही खरीदेंगे या हम सिर्फ अपने सारे पैसे एफडी में डाल देंगे. नहीं भाई, दे आर डूइंग एवरी सिंगल थिंग आउट देयर, being extremely diversified. Sachin Tendulkar might say कि SIP करते रहो and mutual fund में पैसे डालते रहो, but it's not as if that he is doing it. He is picking like small cap, mid cap companies a lot. He is investing like real estate a lot. He is investing in a bunch of different things, startup investing a lot. So सबकी सुनो, but eventually you have to analyze for your own portfolio and do things that are right for you. So okay, so on that note, let me start speaking about a couple of more news items that I read which really broke my heart and which also highlights the point that why is it that retail investors do not invest properly and कई बार तो बहुत ही foolish investments होती हैं. For example, this is a very recent piece of news कि one person lost 1.5 crore betting and उनके ऊपर 1.5 CR की debt चढ़ गई. And then there were people who were coming after his family and the person's wife unfortunately ended her life. Okay, यार अब जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं कि दुनिया भर के ड्रीम 11 और ये सब ऐप्स के ऐड चल रहे हैं, उन सब का तो पैसा बन जाता है इन सब चीज़ों में. एंड देन दीज टाइप ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स और गैम्बलर्स सो टू से दे एंड अप लूजिंग ऑल देयर लाइफ सेविंग्स एंड इनफैक्ट डेट पे. तो दिस इज एक्सट्रीमली बैड. अब इसमें आप यार ब्लेम कर सकते हो कि विराट कोहली ने ये ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया. आई डोंट थिंक दैट दैट्स द पॉइंट. See, if someone is gambling their money, the upside is theirs to have, the downside is theirs to handle. You cannot, if you win, if this person would have won, right, तो उनके पास तो बहुत पैसा हो जाता. Then was he sharing profit with विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर या जिनने ड्रीम 11 के ऐड कर दिए? The short answer is no. So अब downside आ गई तो these people will end up taking it. Now I'm not defending कि आपको खराब products endorse करने चाहिए etc. But what you can do to save yourself is that please learn, please play within your limits. आपको gambling करनी है करो, खूब शान से करो, no problem. But यार be understanding of the fact that whatever actions you will take, it can impact your family. Right from day one of starting this channel, I have always advocated diversified investing. जितने भी अच्छे examples मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, you can categorically see that these are diversified investing. What these guys are doing, be it Sachin Tendulkar, Virat Kohli, etc. Why are you gambling everything, right? I mean, this poor person would have gambled everything. Okay, so this is like one really sad piece of news. The second key sad piece of news, which I think is avoidable, is people buying like 11 crore houses. Now these might be HNIs, इनने बहुत मेहनत करके wealth बनाई होगी. And 11 crore का house, there is a project called as DLF Bel Air in Gurgaon. The project price is 11 crore. Okay, and आप Google मार के देखो कि how much rent is this particular project generating. Okay. So the rent is what? The rent is less than 2 lakh rupees. That puts the yield at 2%. मात्र 2% yield मिल रही है 11 करोड़ का घर खरीद के. Why are people buying it? दुनिया भर के reasons हो सकते हैं. But is this an investment grade product? The short answer is no.
वाई? बिकॉज दो तरीके से रियल एस्टेट में पैसा बनता है. वन इज यील्ड आपको अच्छी मिल रही है, सो इट्स अ ग्रेट कैश फ्लो प्रॉपर्टी. क्या इसमें यील्ड अच्छी है? हॉरेबल, राइट? आई मीन 2% यील्ड इज जस्ट रियली बैड. The second type of property is where you feel that the underlying appreciation is really good, right? For example, दुबई में जो villas होते हैं, they appreciate at really fast pace. Now, anywhere villa is going to appreciate more compared to flats. ये आप गुड़गांव जाके फ्लैट खरीद रहे हो 11 करोड़ में, राइट? दिस इज नॉट लाइक अ विला और लैंड और समथिंग लाइक दिस. लैंड या विला होता है, उसका अप्रिसिएशन ज़्यादा होता है. वाई? बिकॉज वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, राइट? उस ज़मीन पे आपने 4 फ्लैट बना दिया. ऑन दैट लैंड इफ यू बिल्ड लाइक 4 फ्लोर flats, right? Now whatever appreciation is, so let's say that the total appreciation of the land is 10%. Now because there are 4 flats built on it, how much is the individual appreciation of that flat? The individual appreciation will be, one could argue, 2.5%, right? Which is 10% divided by 4. It gets divided into all 4 flats. So therefore 2.5% ही निकल के आएगा. So हमेशा land का appreciation और जो villas हैं उनका appreciation ज़्यादा होगा compared to flats. So flats are yield assets और consuming assets कि आप उनको consume कर लो या रह लो उनमें, वो सब बातें समझ में आती हैं. But people are investing in these type of properties and putting their life savings. So ऐसा मत करना, it will be a horrible investment for you and the chances of you losing money is really really high. Okay. So now comes the next point that lot of investors, for example Elon Musk, भाई उनको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, so he invests in cryptocurrency. जैसे for example Bitcoin में उनके बहुत इन्वेस्टमेंट है, which has skyrocketed. Now Elon Musk investing in Bitcoin makes a lot of sense, right? क्योंकि उनको समझ में आती है चीज़. हाँ, होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल आई पुट अ लॉट ऑफ मनी इन बिटकॉइन, आई ओन 2 full bitcoins व्हेन द क्रिप्टो मार्केट वाज गोइंग डाउन, आई वाज होल्डिंग इट, आई हैड नो ट्रबल होल्डिंग इट. लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि यार इतना डूब गया, 50% हो जाता है, गिर जाता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एंड आर्ट इस पर टैक्स इतना लग जाएगा, ये हो जाएगा. भाई आप उसके 5 ईयर रिटर्न चेक कर लो, आप उसके मैक्स रिटर्न चेक कर लो, 1 ईयर रिटर्न चेक कर लो. इट हैज़ टर्न आउट टू बी द बेस्ट एसेट प्रोबेबली इन द लास्ट 5 years. अब आप फालतू के लोगों की बातें सुनोगे जिनने कभी खुद पैसा नहीं लगाया है, दे नो नथिंग अबाउट टेक, दे विल कीप ऑन पॉइंटिंग एट यू कि इसमें ये नहीं है, कोई अंडरलाइंग फंडामेंटल थीसिस नहीं है. भाई आप पढ़ के तो देखो, आप समझो तो व्हाट इज लेयर 1 प्रोटोकॉल, लेयर 2 प्रोटोकॉल, लेयर 3 प्रोटोकॉल, व्हाई पीपल have a little bit of mistrust on governance, how Bitcoin is exactly a fixed supply assets. You need to understand the fundamentals and believe in the fundamentals. You don't need to believe in me, you don't need to believe in third person. You have to understand tech. Only if you understand tech, invest in Bitcoin. If you don't understand tech, आपको कुछ ही अजीब सी चीज़ लगेगी वो. So please don't even go there, right? So that's my simple point. Now coming back to this topic, see a lot of people, for example Snoop Dogg. अब Snoop Dogg एक रैपर है, Ashton Kutcher is an actor. अब आपको लगेगा कि यार ये लोगों को टेक वेक आती नहीं है, why are they investing? भाई एस्टन कुचर के बारे में आप पढ़ के देखो, right? I mean he has invested in some of the best startups out there, not in India, across the globe. He has been one of the angel investors in tech. Very very smart guy, he understands it. Same applies to Snoop Dogg. He has one of the sharpest business mind. मेरा approximation होगा that he has made more money in business compared to its primary career. So these are smart people. It's not as if कि आप सिर्फ वो because they are like rapping, so उनमें they might not understand it. Please don't believe in all that. Snoop Dogg is a very very smart guy on that note. Okay. Same applies to Mark Cuban. He is an investor that I really look up to. He has made some really smart investment decisions. अब फाइनल पॉइंट आता है जो है टैक्स सेविंग का पॉइंट, कि भारत एक टैक्स प्रधान देश है. इसमें सोनम कपूर जी ने एक फ्लैट खरीदा था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, एंड शी सोल्ड इट फॉर 32.5 CR, एंड इनने ये फ्लैट खरीदा था 2015 में फॉर 31.48. सो भाई कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए थे, बिकॉज दिस इज 2023 न्यूज, सो मे बी 2022 में दिस ट्रांजैक्शन वुड हैव हैपेंड. So in 6 years, her property is appreciated by how much? 1 crore. आप बोले क्या फालतू का investment? No, it's not like that, right? She would have made money on this. How exactly? I can't decode it for you. You guys are smart enough, so खुद figure out कर लो कि कैसे किया होगा. It's an adjustment between white money and cash money. Now, before Sonam Kapoor's legal team sues me, this is not a maligning video. I have no evidence. I am not saying that she has done it or she has not done it. I am just leaving that decision up to the audiences. Okay, that's it. That's what I am saying. दिस इज डन ए. अब आप बोलोगे अच्छा प्रूफ नहीं है तो बात मत करोगे, फाइन, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट. सेकंड की थिंग, सुहाना खान हैज़ परचेज्ड सम एग्रीकल्चरल लैंड. आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा भारी भरकम मात्रा में. कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन बिकेम अ फार्मर. आपको क्यों लग रहा है वाई आर दीज पीपल डूइंग इट, राइट? कि एकदम से मतलब उनको खेती करनी है. आपने आलू उगाते हुए देखा अमिताभ बच्चन जी को, या आप टमाटर बेचते हुए देखा कि आपने टमाटर की खेती देखी है उनकी? द शॉर्ट आंसर इज नो, बट दीज पीपल डू इट बिकॉज देर आर टैक्स एडवांटेजेस टू टेकिंग ऑल दीज स्टेप्स. ओके, सो यहाँ पे बात छोड़ देते हैं वरना लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू समराइज दिस वीडियो इन 5 सिंपल पॉइंट्स. नंबर 1,
Please focus on your active income. Virat Kohli ji, Sachin Tendulkar ji, Sonam Kapoor ji, Alia Bhatt ji and everyone, they have all built their very solid active income. Okay, so please do that. Please do not believe in the concept कि भाई नौकरी हमारी ठीक नहीं चल रही and you know we cannot earn money and somehow you know we'll be able to invest in startups and get rich. Maybe, but that's not a structured path to getting rich. सेकेंड की पॉइंट दैट इन्वेस्ट इन योर कंपेटिटिव एडवांटेज. जिस फील्ड के बारे में आपको पता है प्लीज गो एंड इन्वेस्ट योर मनी इन दैट फील्ड. कोई ज़बरदस्ती नहीं चल रही है कि आपको ज़बरदस्ती रियल एस्टेट में लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, इक्विटी में लगाना है वगैरह वगैरह. थर्ड की पॉइंट, डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेज. हर कोई, जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं सब डाइवर्सिफाई करके चलते हैं. येस, सचिन तेंदुलकर डज दी एड फॉर म्यूचुअल फंड, सही है एंड ऑल दिस स्टफ, बट उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितने हैं और स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितने हैं वो आप खुद देख लो. ओके, सो दिस इज थर्ड. फोर्थ पॉइंट, प्लीज लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल माइक टाइसन ने क्या गलती करी थी? ही डिड नॉट इन्वेस्ट सेंसिबली. व्हाट अबाउट निकोलस केज? निकोलस केज ने जब उनके पास बहुत सारा पैसा था ही बॉट रियल एस्टेट. लाइक बिल्कुल रियल एस्टेट ही करेंगे, फिर यार 2008 क्राइसिस आई, बाजे बज गए. राइट, सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक. If you guys want, I will continue to make these type of videos. If it is fun and engaging, do let me know. Then fifth point, that make concentrated bets that you can understand. मार्केट में डिबेट चलती रहती है कि आपके पास सिर्फ 5 स्टॉक्स होने चाहिए, 20 नहीं होने चाहिए, या आपके पास सिर्फ एक रियल एस्टेट होना चाहिए, 5 नहीं होने चाहिए. भाई okay fine, do you have high conviction on that bet? Right, that's the point, because anything that you purchase by very difficult, you straight line में ऊपर जाएगा, it will go through a period of volatility and you will only be able to hold it if you believe in that asset. What I would recommend, my personal strategy is that I am a diversified investor. कि मेरे पास यार ऐसी कोई insider information तो होती नहीं है चीज़ों की. All I can simply do is analyze the market really well for all of you, analyze the real estate really well for you, analyze the crypto space really well for you, analyze a bunch of commodities for all of you, and bring structured information on which you can act. So with that note, I'll end the video. I hope that you liked it. In case you want to understand how to build an equity portfolio, go and watch this video. Please subscribe to the channel and share it with your friends, and I'll see you soon.